श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 61 ततश्च बृन्दावनतोऽतिदूरतो वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलै हृदन्तरे भक्ततरद्विजाङ्गना कदम्बकानुग्रहं वहन् ततो निरीक्ष्यात् शरणे वनान्तरे किशोरलोकं श्रुतिदं त्रिशाकुलम् अदूरतो यज्ञपरान् द्विजान् प्रति व्यसर्जयोधीदि वियाचनायतान् गतेष्वतो तेष्वभिधाय ते विधां कुमारकेष्वोदनयाचिषु प्रभो श्रुतिस्थिरा अप्यभिनिन्युरश्रुतिं न किञ्चिदूचुश्च महीसुरोत्तमा अनाधरात् खिन्न धियो हि बालका समाययोर्युक्तमिदं हि यज्वसु चिरादभक्ता खलु ते महीसुरा कथं हि भक्तं त्वयि तैः समर्प्यते निवेदयध्वं गृहिणी जनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुलायिमा इति स्मितार्द्रं भवतेरिता गदास्ते धारकादा रजनं ययाचिरे गृहीतनाम्नि त्वयि सम्भ्रमाकुला चतुर्विधं भोज्यरसं प्रगृह्यता चिरं धृत त्वत्प्रविलोकनाग्रहा स्वकैर्निरुद्धा अपि तूर्णमाययुः विलोलपिञ्चं चिकुरे कपोलयो समुल्लसत्कुण्डलमार्द्रमीक्षिते निधाय बाहुं सुहृदं ससीमणि स्थितं भवन्तं समलोकयन्तता तदा च काचित् वधूभागमोद्यता गृहीतहस्तादयितेन यज्वना तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जसा विवेच कैवल्यमहो कृतिं यसौ आदाय भोज्याननुगृह्यता पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृहयोज्झतिर्गृहं विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाश्चकर्त पर्त्रो न पिता स्वगर्हणान् निरूप्य दोषं निजमङ्गना जने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः प्रबुद्ध तद्वैस्त्वमभिष्टुतोद्विजैर्मरुत्पुराधीश निरुन्धि मे गतान् श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटानिकरे भगवति अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।